In this series, we are going to understand the concept of electronics through gate questions. First, we will solve diode related question. Later on, we move for further questions. So, this is one of the question asked in GATE 2000. Find out this voltage V naught. This voltage V naught we have to determine. Options are given. So, in this kind of question, when diode is there, first of all, determine whether the diode is on or off. To determine, to check whether the diode is on or off, you have to check the anode voltage is higher than cathode or not. If anode voltage of the diode is higher than cathode, the diode is on. We know this. So, to determine this, suppose that this diode was not there. What would be voltage at this point? I have written it VA. It was this point VA. VA. What would be the voltage at this point? If so, we will determine this voltage by removing the diode, whether the diode is on or off. We want to determine this voltage, whether the diode, and what is the voltage at the anode of the diode. What would be the voltage here if diode is not there? Now, if we place the diode, it will be on or off depending upon whether it is forward bias or reverse bias. So, this voltage, to determine this point voltage, just write a KCL equation. You can use KVL also, but this would be simple. For incoming current, 4 minus VA upon 2 incoming current at this point is equal to outgoing current VA minus, this is negative voltage, so minus of minus 2 upon 2, 4 minus VA upon 2 is equal to VA plus 2 divided by 2. 4 minus VA is equal to VA plus 2. 2 VA is equal to 2 VA is equal to 1 volt. So, this point voltage is 1 volt. That means all the voltage are with reference to this point. इसी पॉइंट के रेफरेंस से सारे वोल्टेज लिखे गए हैं. यही मेरा पॉइंट है 4 वोल्ट इसके रिस्पेक्ट में, यानी इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में विथ रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट वोल्टेज इज 1 वोल्ट. दैट मींस डायोड इज ऑन. एनोड इज हायर वोल्टेज दैट कैथोड. एनोड पर पॉजिटिव वोल्टेज है. इस पॉइंट सारे वोल्टेज किसके रिस्पेक्ट में लिखे गए हैं? इसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में ये वोल्टेज, इसी के रिस्पेक्ट में ये वोल्टेज, इसी के रिस्पेक्ट में. तो आपका VA पे क्या है? इसके रिस्पेक्ट में VA कितना है? 1 वोल्ट पर है, यानी कि हायर वोल्टेज पर है. तो ये डायोड मेरा क्या है? ऑन है. अगर डायोड ऑन है, डायोड इज ऑन. डायोड अगर ऑन है, इसका मतलब क्या है? डायोड को दिया नहीं गया है, तो हम इसको आइडियल डायोड मान ले रहे हैं. आइडियल डायोड है, ना कोई फॉरवर्ड रेजिस्टेंस है, ना कोई कट इन वोल्टेज है. आइडियल डायोड है. अब देखिए, अब यहां पर मेरा क्वेश्चन सिंपल हो गया. अब एक्चुअल में यहाँ का वोल्टेज मुझे निकाल देना. अगर ये करंट निकालना है ना, मुझे ये वोल्टेज निकालना है. ये वोल्टेज यहाँ का वोल्टेज है, ये वोल्टेज निकालना है, ये वोल्टेज. अगर मैं अब क्या करता हूं, देखिए पैरेलल नेटवर्क है अगर, तो केसीएल लगाना आसान होता है. यहाँ का वोल्टेज मैं मान लेता हूँ VA. ये वो VA नहीं जो चेक किया था, उस समय तो डायोड को ऑफ माना था, तो इसलिए वो इसको VA डैश लिख देते हैं लिखने के लिए. आप समझ रहे हैं ना, वो VA नहीं है क्योंकि वो तो डायोड को ऑफ मान कर किया था, तो डायोड ऑन है. तो अब निकाल रहे हैं. चलो केसीएल लगा के निकाल लेते हैं. 4 माइनस VA डैश अपॉन 2 इनकमिंग, इसको इनकमिंग करंट मान लिए. चलो इसको आउटगोइंग मान ले रहे हैं, इसको भी आउटगोइंग. इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट VA अपॉन, ये रेजिस्टेंस आपको दे रखा था. ये रेजिस्टेंस कितना था? ये रेजिस्टेंस आपको दे रखा था, ये 2 ओम दे रखा था. ये रेजिस्टेंस दिया हुआ है 2 ओम. VA बाई 2 और यहां से प्लस VA प्लस 2 माइनस ऑफ माइनस 2 अपॉन 2. यही मेरा रेफरेंस पर समझिए. VA बाई 2 क्यों कर दिए? इसी पॉइंट के रेफरेंस में सारा वोल्टेज लिख रहे हैं, तो VA सीधे लिख दिए, या रेफरेंस पॉइंट को 0 भी मान सकते हैं. इसी पॉइंट के रेफरेंस में सारे वोल्टेज लिखे गए हैं. इसी पॉइंट के रेफरेंस में, यही मेरा रेफरेंस पॉइंट है.
समझ गया, रेफरेंस पॉइंट यही है, सारे वोल्टेज इसी के रेफरेंस में, तो रेफरेंस को आप जीरो भी मान सकते हैं, इसी के रेफरेंस में सारे वोल्टेज है, समझ गया ना बात को। तो VA 2 कैंसिल, 4 माइनस VA डैश लिख लीजिए सबको, ताकि वहां से कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए VA डैश लिख रहे हैं, आप कुछ भी लिख सकते हैं, आपको क्या समझने की बात है। ये 2 VA और इधर गया 3 VA डैश इक्वल टू 4 में से 2 गया 2 VA डैश इक्वल टू 2/3, ये वोल्ट मेरा आया। ये यहां से वोल्टेज है, करंट ऐसे जा रहा था, ये हाइयर पर आया है, ऐसे मैंने वोल्टेज को बता दिया। पूछ कैसे रहा है, ये मैंने निकाला है दिस माइनस दिस, ये पूछ कैसे रहा है दिस माइनस दिस, यानी कि अगर मल्टीमीटर से चेक कर रहे हैं तो लाल वाला या टर्मिनल यहां रखना है और ब्लैक वाला यहां, यानी कि दिस माइनस दिस पूछ रहा है। VA को जो पूछ रहा है मुझे दिस टर्मिनल माइनस दिस टर्मिनल, ये वाला हाइयर पे आया है, लेकिन जब ऐसा लिखेंगे हम दिस माइनस दिस तो क्या हो जाएगा जी, ये हाइयर पर है, हमको लिखना है दिस माइनस दिस, तो क्या हो जाएगा नेगेटिव VA डैश, VO क्या हो जाएगा -2/3। VO क्या है, ये वोल्टेज हम लिखे हैं ऐसे लिखे, ये हाइयर पे है लोअर पर है, ये हाइयर पे है 2/3 वोल्ट, और लिखना मुझे कैसे है दिस माइनस दिस, ये 2/3 वोल्ट पर इसके रिस्पेक्ट में, तो यहां से माइनस करेगा तो क्या आ जाएगा, यहां के रिस्पेक्ट में लिखेंगे तो दिस माइनस दिस नेगेटिव -2/3। VO ऐसे देखिए साइन दे रखा था, ऐसे लिखना है दिस माइनस दिस, हमने वोल्टेज लिखा है ऐसे, करंट है ये हाइयर पर है, लेकिन लिखना कैसे है ऐसे, दिस माइनस दिस तो नेगेटिव। VO मेरा क्या हो गया -2/3। क्या कोई ऑप्शन दे रखा है, नहीं, ये क्या हो गया आपका नन ऑफ दिस। इस तरह से एक क्वेश्चन हम लोग किए। नाउ इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू डिटरमाइन दिस करंट ID। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन गेट 1997, given that diode is ideal, this diode is ideal, this current we have to determine. In the circuit where diode is given, first of all we have to check whether the diode is on or off. To check the diode, we should check that anode voltage is greater than cathode or not. If anode voltage is greater than cathode, the diode is in forward bias and it is on. So to check this, assume that diode was not there. And what would be the voltage at this and this point? So just I am removing this diode and now I want to determine this voltage and this voltage. Now suppose after that the diode is placed. So what was the voltage here? Suppose it is A. Just for understanding, suppose it is B. Voltage at A would be, this is a voltage source, current into this resistance, 10 divided by 4 plus 4, 4 plus 4 is 8, is the current into this resistance. This comes out to be 5 volt, and voltage at B, this is a current source, so this current into this resistance, this is the voltage at this point with respect to this terminal. All the voltages are written with respect to this terminal, okay. So this voltage at this point with respect to this terminal is current into resistance. VB is 2 current source is given into 2 volt. So this point voltage is greater than this point voltage. So now suppose the diode is placed. If I place the diode here, now the diode would be on. The diode, first of all I have checked. Now the diode is on. Write in your copy step by step manner. If the diode is on and given that the diode is ideal, so I am removing this as a conducting wire. No cut-in voltage, no forward resistance. Just now I have to determine this current. So you can solve this in many ways. In just what I am doing, I am converting this current source into voltage source. Then this branch, parallel branch will remove. So you can solve in other way also. To solve this, what I am doing, I am converting this is 4 ohm, this is 4 ohm, and this is the, where the diode was there, now it is modeled as a conducting wire on position. And now to convert a current source into voltage source, multiply the parallel resistance with the current source. Current value is 2, multiply with 1, it would be 2 volt. And place the parallel resistance into series. So I am placing this resistance in series, 1 ohm
This you will definitely study how to convert in network this way. This is a voltage source of 2 into 1, 2 into 1, 2 volt, and this series parallel resistance comes in series. Now, in this way, we convert a current source into a voltage source. Now, the one branch is removed. Now, if I know the voltage here, we can calculate the current, because if the parallel circuits are there, a parallel branch is here, easy to use KCL. So, by using KCL, I determine this node voltage. Suppose it is VA. Suppose it is VA. Suppose it is VA. So, this would apply KCL. Incoming current, suppose this is outgoing current, this is outgoing current. So, 10 minus VA upon 4 is equal to VA by 4 plus VA minus 2 by 1. 10 minus VA by 4 is equal to 4 VA plus 4 VA minus 4 into 2, 8. This comes out to be 4 cancels. 10 minus VA, 5 VA minus 8. When we make minus 8 in this side, then it becomes 18. 18 is equal to, this goes to that side, 6 VA. This means VA comes out to be 18 by 6, that is 3 volt. 3 volt at the voltage at this point. Now we have to determine this current. This was the current which we have to determine, this current. So how? Just write voltage difference upon resistance. So current ID is voltage difference is VA minus 2. So VA is 3 volt. 3 minus 2 upon 1, it comes out to be 1 ampere. Answer is 1 ampere. 1 ampere current will pass through the diode when it is on. Thank you. This question, it was asked, the static characteristic of adequately forward biased PN junction diode is a straight line if the plot is off. We know that the plot of diode voltage and diode current is non-linear like this. It is exponential. Adequately forward bias means in this region, somewhere here. A straight line if the plot is off. This is the plot of diode. Current voltage current. It is not so. This options is not possible. I versus V is not a straight line, it is exponential. So, to check now I versus log V, log. So, let us check. The relation is I diode, we know I diode is I naught reverse saturation current e to the power voltage across diode upon eta Vt. Vt is thermal voltage, eta is a constant. Now, this is in this way, minus 1 also, but it is adequately forward bias, so we can neglect this one. This is quite high, this Vd is quite in this way, here is Vd, so we can neglect this quantity is larger than this, so you could write only this part. Okay, so this is non-linear, ID is exponentially, the relation is exponential, not linear as in the graph. So let us take, all are in log, so take the log ID, turn I not here, so it will become ID by I. Move it here, is equal to ln, this is ln, log means in base A, base E. All are in base E. Log I am writing, but all are in base E. So you can write log, base is E. Vd upon eta Vt. In power of E, base is E. Base is E, this is power, base is E. Just I am writing here, base is E. Okay. Log E, ID by I naught. This is power, so it can come here.
as you have must studied in 12th, log base of same is 1, you know na, log e with base e is 1, so it comes out to be log base e. I am writing, you can remove it also, but just for understanding I am writing log base e, base is e, base is e, id by I naught is equal to, this is 1 Vd upon eta Vt. All are constant. So log Id, if Vd, log Id and Vd is a straight line, or you can write like this. Log Id minus log I naught is equal to Vd upon eta Vt. So log Id is equal to eta Vd upon, sorry, Vd, it is Vd upon eta Vt plus log I naught, this way. So log Id varies, Vd is a linear relation, y is equal to m into x, this is entire thing is a constant, into Vd plus some, this is constant. So this is of equation of a straight line, y is equal to some constant m into x plus and c. So y varies linearly, x is this log Id is, so log Id and Vd, this is the equation of a straight line, this is a constant like this, m into x plus this is a constant. So log Id and Vd, the line is a straight line. So log I and V, this is the V, log I and V. V represent voltage across diode like this. This log Id, how it changes? Vd into a constant, like y is equal to m into x, this is x is Vd, x variable is Vd into constant plus some constant, y is equal to m plus c. So in this question, at 300 Kelvin, for a diode, current 1 ampere, a certain germanium diode requires, for a diode current 1 milliampere, a certain germanium diode requires a forward bias of 0.1435. A germanium diode is there and it requires a voltage of 0.1435, then a current of 1 milliampere is in the circuit. Okay, for 1 milliampere current, this is germanium diode. Germanium. It requires 0.1435 for this current. Whereas a certain silicon diode is there. A silicon diode is also there. It requires 0.718 volt forward bias for same current. Now I naught 1 milliampere. For 1 milliampere, this required 0.1435. For 1 milliampere to current to flow through this circuit, through the other diode, it required 0.718 volt. Now we have to determine the ratio of reverse saturation current of germanium diode to the silicon diode. Okay. We know the diode current equation is, I diode is I naught reverse saturation current e to the power V diode upon eta Vt minus 1. We can approximate it like this, I naught e to the power Vd upon eta Vt. If it is sufficiently forward biased, we can neglect 1 in comparison to this. We can write like this. So Id is equal to this, and now for germanium diode it is given Id germanium. I am just writing, there are two diodes, so just I am putting the suffix G to distinguish germanium and silicon. We have I naught, this I naught germanium, reverse saturation current of germanium, just write a G just to distinguish silicon, and this I am writing this. And e to the power V diode required voltage is 0.1435 upon
eta Vt. Eta for germanium is 1 and for silicon it is 2, and Vt is thermal voltage. Vt is thermal voltage. It is equal to at room temperature. At room temperature, it depends on temperature. At room temperature, it is 26 millivolt, or you can write 0.026 volt. So 1 into 0.026. This comes out to be IOG. I am writing just to reverse saturation current of germanium, because I have to use for silicon also. For silicon, just write there silicon. I diode for the silicon is I reverse saturation current of silicon into e to the power voltage applied is 0.718 upon eta Vt. Eta is for germanium, silicon is 2, and Vt is same 0.026. These are the two currents, one for germanium, one for silicon. For this it comes out to be, for germanium it comes out to be reverse current of germanium into e to the power, this you divide using your calculator, it comes out to be e to the power 5.519, which is equal to this is equal to IO germanium into this e to the power 5.519 comes out to be 249.38. This is one for germanium. Now for silicon it comes out to be I reverse current of silicon, which we do not know, and ratio we have to found. In this entire thing is e to the power 0.718 upon 2 into this. This comes out to be e to the power 13.80. This comes out to be E reverse current of silicon into this comes to be this e to the power this, when you calculate using your calculator, it comes to be 1056001.3, or you can write IOS. You can just you can write in terms of power also 105.6 in 10 to the power 4. Just to make look it simple, I am writing in terms of power. You can write in this way also. There is no problem in it. Now both are equal. I diode is equal to I silicon. Both is 1 milliampere. So I am equating both of this. Both are equal. For this it required 0.718. For germanium it required 0.1435, and in both the diode current is 1 milliampere. So I am equating both of them. IO germanium, reverse current of germanium into it comes 249.38. This is the current, and this is equal to 1 milliampere. Both is 1 milliampere, so both are equal. Then I diode silicon is I reverse current into, for this voltage I have calculated it as for 0.718, it comes out to be 10455.6 into 10 to the power 5. Now this we have to determine. Reverse current of germanium, both is 1 milliampere, just we have equated, both are equal. But only thing is that for this we require higher voltage, for this we require lower voltage for germanium. So reverse current ratio IOG upon IOS silicon, it comes out to be 105.6 into 10 to the power 4 upon 249.38, and this comes out to be, if you calculate 4.23, 10 to the power 4 is there, it comes out 10 to the power cube. So this could not be the answer. This could not be the answer. 8 into 10 to the power cube, 4 into 10, then C is 4 into 10 cube. This is determine the ratio reverse germanium of diode to the silicon diode. This is close approximation, 4 into 10 cube. 4 into 10 cube. This is the answer. This could not be the answer, 4 into 10. Okay. In this question, in the circuit shown below,
the n by 1 n ratio 1 step down transformer, the diode is ideal. The diode has no voltage drop in the forward bias condition. If the input voltage is this 10 sin omega t, this is the input voltage represented here as 10 sin omega t. Average value of the load voltage, this is the load RL, and the average value of the load is 2.5 by pi. We know that this is a full wave rectifier circuit, and for full wave rectifier circuit, V average or VDC comes out to be 2 Vm by pi, where Vm is this voltage, the voltage across the secondary is this voltage Vm. Because in center tap transformer, the secondary is in two parts, this part and this part, Vm between this and this, Vm between this and this, maximum. This is Vm, maximum. For example, for primary, this is Vm. So, for secondary, this Vm represent this maximum voltage at the secondary. ये represent कर रहा है. This is given in the question 2.5 by pi. So, Vm comes out to be 2.5 by pi. Now, the transformer, now this Vm सेकेंडरी का मैक्सिमम मुझे मिल गया. अब प्राइमरी के 1 by n निकालना है मुझे, तो प्राइमरी से सेकेंडरी में मुझे रिलेशन एस्टैब्लिश करना होगा. तो यहां देखिए सेंटर टैप ट्रांसफार्मर रेशियो दे रखा है 1:n, लेकिन जो सेंटर टैप ट्रांसफार्मर, ये पूरे का रेशियो देखा है, पूरे टर्न रेशियो. सेंटर टैप ट्रांसफार्मर दो पार्ट में होते हैं. यहां पर अगर यहां टोटल 10 टर्न है तो 5 टर्न यहां, 5 टर्न यहां. समझ गए ना बात को? हाफ हाफ. तो पूरे का टर्न रेशियो दे रखा है. अगर इधर 1 है, पूरा का 1 है, तो हाफ इधर, हाफ इधर. तो ये हाफ का मुझे लिखना पड़ेगा टर्न रेशियो, क्योंकि ये वोल्टेज है. तो ये हाफ का टर्न रेशियो कितना होगा? हाफ. ये पूरे का 1 by n है, तो हाफ का टर्न रेशियो कितना हो जाएगा? इस पार्ट और दिस पॉइंट का रेशियो कितना हो जाएगा? 1/2n, n2 by n1, n2 ये पूरे का टर्न रेशियो दे रखा था. मान लीजिए कि अब ये पूरा 10 है, तो यहां कितना हो जाएगा? 5. ये 100 है टर्न्स, तो यहां हो जाएगा 50. तो पूरे का टर्न रेशियो दे रखा था कि 1 by n है, तो हाफ का कितना हो? ये अगर हाफ में हाफ, तो ये हो गया मुझे हाफ. ये 1 को हाफ इधर, हाफ इधर, हाफ इधर, हाफ इधर. तो टर्न रेशियो कितना हो जाएगा? 1/2n, 1/2n. इसके रिस्पेक्ट में सेंटर टैप ट्रांसफार्मर के इसके रिस्पेक्ट में टर्न रेशियो, क्योंकि ये वोल्टेज है, वो ये वोल्टेज है. दो पार्ट में आपके सेंटर टैप ट्रांसफार्मर होते हैं. हाफ टर्न्स इधर, हाफ इधर. तो ये अगर पूरा 1 है तो हाफ इधर हो जाएगा, हाफ इधर. तो रेशियो कितना होगा? 1/2n, n2 by ये है n2. ये इससे मुझे मतलब इस हाफ से, ये n2, ये n2 दोनों बराबर है. ये n2 मतलब ये 50 टर्न, मान लीजिए 50 टर्न है, तो ये भी 50 टर्न है. ठीक है, समझ गया बात को? अभी मुझे निकालना है n. तो ये देखिए, ये n निकालना है मुझे. n2 मतलब मैंने कहा हूं, ये n2 जो रिप्रेजेंट किया हूं 50 मान लीजिए, जस्ट इलस्ट्रेशन के लिए बोला. ये 50 है तो ये भी 50, टोटल 100. ठीक है ना? आधा हाफ इधर, हाफ इधर. समझ गए इस बात को? ये n2, ये n यहां दे रखा है, ये 1 रेशियो 1:n. ये n, ये रेशियो है 1:n. पूरे का रेशियो मान लीजिए 1 by n आ गया 1/10, 1/10. और इधर टोटल में है 50, 100, 10. तो इधर कितने हो जाएंगे? 100. ये होंगे ना? अगर ये पूरे का 10 है तो 5 इधर, 5 इधर, 5 इसके बीच में. ये मैं कहना चाह रहा था, 5 ये, 5 ये. वही ना? समझ गए ना बात को? टोटल दे रखा है. टोटल मान, अब मुझे अपने समझने के लिए कह दिया हूं, अभी निकालना है. 10 है इधर, तो ये टोटल दे रखा है 10/100. यही है आपका, मान लीजिए 1/10 मान लीजिए कि रेशियो रहता है. 1/10 रहता है, ये 1/10 रहता. तो 10 इधर रहता, 100 इधर. यही निकालना है n मुझे, बस समझाने के लिए समझा दिया क्या है. और 5 यहाँ, 5 यहाँ, 10 टोटल है अगर, तो 5 यहाँ, 5 यहाँ. मान लीजिए n 10 रहता तब. अब मुझे n निकालना है, इसलिए मैं हाफ क्यों किया, समझ गया ना? एक है तो हाफ इधर, हाफ इधर. 1/2n, 1/2n रेशियो. अब देखिए, हम जानते हैं V2 by V1, V2 by V1, V2 by V1, V2 by V1. समझ, ये वोल्टेज को बोल रहा हूं. दोनों पर बराबर बराबर वोल्टेज आते हैं कि टर्न दोनों में सेम होता है. ये कितने आगे जी? टर्न रेशियो, मेरा टर्न रेशियो कितना है? V2 by V1. इधर है आपका V2 by V1, आपका हो जाएगा N2 by N1, सेकेंडरी अपन प्राइमरी. ये होगा N2 by N1. ये है N2, ये है N1. दे रखा है 1/2n. इन है टर्न रेशियो 1/2n.
2n। हाफ क्यों कर दिया, समझ गए बात को। तो आपका V2 क्या आ जाएगा, V1 इंटू 1/2n दिस। और आपका V2 मैंने निकाल रखा है, चलो V2, तो ये V2 तो मुझे मैक्सिमम मालूम है, मैक्सिमम Vm कितना है, सेकेंडरी का मैक्सिमम वोल्टेज कितना है, V2 2.5/π मालूम है मुझे, सेकेंडरी का मैक्सिमम। ये V1 प्राइमरी का मैक्सिमम हो जाएगा, प्राइमरी का मैक्सिमम मुझे मालूम है 10, V1 प्राइमरी का मैक्सिमम लिख रहे हैं, तो इधर का मैक्सिमम कितना आएगा जी, 1/2n। ये n मुझे निकालना है, 2 × 5 = 10, और आपका कितना आया था, आपका पाई कट गया था, सॉरी यहाँ पर आपका आया था Vm/2 आया था, यहाँ ध्यान रखिएगा, पाई कट गया था ना, Vm 2π/5/2 आया था, यहाँ 2 है वो, ध्यान रखिएगा 2, और ये आपका n आ गया, यहाँ से देखिए ये 10 2 5 से काट दिए हैं, और ये जो मेरा n आ गया वो आ गया आपका 2.5, ये n को यहाँ कर दे रहे हैं ऊपर में, n = 2 उधर चला गया, 2.5 n = 5 × 2, n = 5 × 2 / 2.5, 2.5 यानी कि 2 2 दूनी का 4, ये आ गया n4। समझ गए बात को, ये यानी कि रेशियो क्या है, n4 आ गया, यानी कि ये आपका आंसर सही है। समझ गए, यानी क्या था, ये रेशियो क्या था जी, अगर यहां देखें तो अब क्या था, 1 और 4 का अनुपात था। अगर आपका 10 है सेकेंडरी पूरे सेकेंडरी में 10 है, पूरे सेकेंडरी में पूरे में मिलाकर, तो इधर कितना था, 40। अगर 10 रेशियो का मतलब है इधर 10 है, इधर समझाने के लिए क्वेश्चन बन गया है, 40 है इधर अगर 10 टर्न है पूरे में, तो 40 इधर, 40 इधर सेकेंडरी में, तब हो गया 1/4 का, जिसमें 5 इधर है 5 इधर, n हाफ किया था मैं, ये दे रखा था 1/n, तो हाफ करके क्यों किया था, आप समझ गए बात को ना, एग्जाम्पल से समझा दिया मैं, 1:4 आया। ये 1/2n करने का क्या था, तो 1 दे रखा था पूरे का, तो इस हाफ का हाफ ये, और इधर हाफ। समझ गए बात को, ओके, थैंक यू।